Good morning, everyone. We'll just wait for a couple of minutes and let everyone join. After that, we are going to start the session for the workshop. Sure. Good morning, everyone. Am I audible, sir? Yes, you're Okay. audible. Okay, good morning, everyone. This is Sneha, and I am the coordinator for Students Advanced Technology Workshop Program. On behalf of PHN Technology Private Limited, I would like to extend a warm welcome to all the students and faculty members who have joined us today for the Android Development Workshop. Also, I'll request all to like and subscribe our YouTube channel in order to get more updates about our programs. Okay, so we are thrilled to have all of you here, and we hope that this workshop will be a valuable learning experience for you. Our company, PHN Technology Private Limited, started as a robotics company in 2013, and since then, we have now evolved into a dynamic software development in areas of business solutions, digital marketing, Android development, web development, and IoT development. Today, I'm very delighted to speak to you about the vision and mission of our company, that is PHN Technology Private Limited. Our vision is to transform practices into knowledge by going beyond the software and training programs to provide the best solution. We believe that in today's rapidly changing business environment, knowledge is power, and it is essential to be able to adapt the change quickly. Our mission is to provide technology-based learning platform to all the students in India and effective software products to our clients. We are committed to leveraging technology to make education accessible to everyone and help our clients to achieve their goals. As a company, we are committed to creating an environment that fosters creativity, innovation, and collaboration. We believe that the learning should be a continuous process, and we are always looking for ways to improve our skills and knowledge. We are especially grateful to have Mr. Sumit Megesa as our trainer for this workshop. With his extensive experience in Android development, we are confident that he will provide you with the valuable insights and practical knowledge that you can apply in your future interviews. Once again, I welcome you all. Now,
I would like to introduce you all about our esteemed trainer for today's session, today's Android development workshop session, Mr. Sumit Mirge sir. Mr. Mirge is a lead engineer at Redis India, and he brings a wealth of knowledge and expertise to this session. With over 6 years of work experience, Mr. Mirge has worked with some of the top companies in tech industry, including OnePlus. He has extensive experience in Android development and has played a critical role in development of several successful projects. Throughout his career, Mr. Mirge has demonstrated a strong commitment to excellence and a passion for innovation. He is a natural leader, and his ability to inspire and motivate his team is unparalleled. We are incredibly fortunate to have Mr. Mirge as our trainer for this workshop, and I have no doubt that his knowledge and expertise will be definitely have immense value to all of you. Please join me in welcoming Mr. Sumit Mirge to our workshop. Now, without further ado, I would like to hand over the session to Mr. Sumit sir. Sumit sir, over to you. Yes, hey, good morning, everyone. So, hi, I'm Sumit, as she have already introduced you. So today we will be learning about Android. So basically, this will just contain how we'll be developing the Android application without any prior knowledge. So it is not necessary that you guys need to have in-depth knowledge of some programming language or something, but you can directly start developing. Like you can directly get into software development, and it is a bit easy. As we will go forward with session, you will get to know. So here I would like to keep this session as interactive as possible, so you guys can comment it out on YouTube. That this chat box is there, that you can post your questions, and I will try to answer all of your questions while session. So let's keep it interactive. And if you kind of feel little boring in between or something, also let me know. We will try to make it more interesting. Okay. So we are here to learn, and in this 3 hours, we will try to learn as much as possible. Okay. So let me share my screen. Before that, Sneha, Yes, sir. Yes, sir. can you please forward me the YouTube link? Yes, sure, sir. So please check your chat box. In chat box, I have pasted it. So am I audible to you? So I have pasted the link in chat box. You are not audible. Okay. Okay. Sure, sure. I'm checking.
Not able to see it. Can you share me on mail? I'm not able to see your message here. Okay, sir. I'll share your mail. Okay. Okay. Basically, let's start. I will be sharing my screen. Okay. Let me know if it is visible. Yes, sir. Your screen is visible, and I mailed you about the YouTube link. Okay. So it is visible right now. So this you have already introduced. Let's start with this Android development today's webinar. So these are the contents for today, which we'll be learning. So which consist all of your basics, how Android application that we'll be making, how this Android project structure is there, where we create the layouts. Like you see that login page or sign up page. You see that edit text where we enter all that text like notepad application. If you'll see, right, you can save all those things. So we will try to go with basics today, complete basics, how we create basic application, how we create a apk, and after creating apk, how do we put it into our devices. Okay, so I hope, yeah, my screen is visible to you. Hello. Yes, sir. Yes. Everyone is able to see your screen, sir. Okay, so now I'll be starting with the basic example. Just give me a moment. Let me share. You all must be aware about Android Studio, right? Where we develop our application. Okay. So, I will be sharing on my screen where we can start with our basic. How do we start? If you guys are using Ubuntu, if you guys are using Mac, and if you guys are using Windows, in all OS, this Android SDK will be different. So you need to know how do we start it in different devices. So here I have made it a shortcut to start Android application. But if you guys are using Ubuntu, there will be one sh files. So that is what this home environment variables and all you need to set. Today we might not be taking that session, but yes, how you can start over here is this SDK for who is using Ubuntu. I will be talking for them. So in this, you will be getting studio.sh files, and that will be, and you just have to go and open so to go and run this particular sh files. So this is nothing but a script file which loads your Android Studio. Okay, so here there are some preloaded projects which might be loading. So we will not go via this. It's just I will be giving you the example. How do we create a basic example in Android? And then while running this, right, we will, yes, someone has asked the question, you can use VS Code, but you cannot be able to run the programs and directly flash it into device. So how do we do that? How do we flash that APK onto device? That also I'll be telling. Okay, for someone's screen is not clear, is it? So Sneha, on your end, are you able to see properly
my screen? Yes, sir. Those who are not able to see the screen clearly, please check your internet connection because I am able to see the screen And clearly. my voice is also clear, right? For someone, Yes, my sir. voice is also breaking. So, No, your voice also clear and screen is also. okay. And also, for this certification related questions, we will cover at the end how you can do certification and all in Android. What prerequisite knowledge you require to go for the certification exams. That also we will clear it at the end of this session. So, okay. I will be starting. How do we create basic Android application? So once you install this Android Studio, right? So first step will be to create new project. So in this new project, you will be getting this. Let me know if I am going very fast. Okay. So here, uh, so this is the basic first step to create your first Android project. So what happens over here is, here you will get multiple activities. Like if you have seen for on e-commerce app and all. So in your e-commerce app, you will be having the sliders and all this Google Pay activities there, Google Maps activity. So these are little bit complex logics. So we will come to this once you are clear with your basics. Okay. So before to cover basics, I will be launching an empty activity which you are seeing on my screen. So Sneha, there are many complaints that for this YouTube link, right? They are not able to see it clearly. Can you just rectify it quickly? Yes, sir. Yes. You please continue with the session and stop for the Okay. day. Okay. Okay. So I will be creating basic empty activity. In this, if you have any question, just let me know. So here, right, you can, this will be your application name. So you can give any application name for your device, for whatever you will be able to see, right? So I hope there is some lag and you will be able to see now. So you will be able to see this name. So this will be your application name. For now, I will be giving PHN Technology Sample 1. So this will be our application name, the project name. And now this is nothing. Here you will be able to see the selection, which I'm highlighting now. See this checkbox. Okay. So this is nothing, but this is the checkbox over here. So what does this, if you will check this, what it will do is it will try to get the Android latest library. So there are a lot of like libraries what Android keeps on developing each month, each day or something. So there is kind of Jetpack libraries it will try to include. So initially we don't want that. Okay. So just to give an example, when you born, right? First thing, like first thing, what we need to do whenever if you have done in your prior experience, we write Hello World program. So this is kind of same thing. First application, first sample, what we will be doing. I will let you know the structure and everything, and you should be clear after that. Okay. So just post comment if this not. Okay. Minimum SDK, we can select anything. This question was asked by Gautam, right?
Yes, it was a good question. Minimum SDK, we can select anything. So here, you can go with Android 5, whatever your device supports. So here, right, when you select any application, what you are making, it will be compatible with. So if you will go with 44, it is 100%, because this was long back when Android developers. Recording in progress. So, is it still buffering now? You're able to see my screen, right? So now we will be going with some any SDK. Like for now, if I will go with Android Oreo, it will just support 90%, 90.7% of devices. And now, okay, you will be understanding. Just be on the screen. You will be able to understand properly. So here, if you will finish this, your whole project, it will make it ready. So just keep in mind, whenever you'll be running this project, you have to be online. You need the good internet connection, and you also have you also have to have need to have the proper device configuration. Okay. Uh, are you not able to hear me? Because I think I'm audible. So if you see, right here, this project is loaded successfully. And now on right hand side, if you will see, it is syncing. It is syncing. It means it is try to downloading and set all those dependencies which is required by this project. Okay. So here now here, right, there currently you will be able to see no devices. Okay. So now what you have to do is from phone you have to turn on the developer option. How you can do that? That one also I will demonstrate. Just give me a moment. Okay. So you will be able to see my device screen. Okay.
device screen casted to my Firefox online, so you will be able to see. Okay, I will be repeating it. So now, how before flashing, you need to make this device like device ready on your this thing. So the screen which you are seeing, this is I have casted it from my device. So this is complete device. So to do that, what you require first is before flashing device, you have to go inside settings in about phone, and you have to tap 4-5 times on your build number. So there will be build number. As I'm using OnePlus phone, so here build number will be there. In Samsung, MI and other devices, it might be something different. Okay. And this is also a good question. What is the use of Gradles in Android? So there are different project-wise Gradle is there. So there, right, you will mention all the dependencies. So we'll come to that folder structure later, right? So all these answers will be, all these questions will be answered. Just give me a moment. Let us go with basics. Those who don't know about basics, we'll go with that first. Okay. So I have already tapped on the build number. So here, right, if you are not aware where your USB debugging will be, so why we have to enable the developer option is to enable this USB debugging. So without USB debugging, you won't be able to directly flash the APK onto your device. So currently, right, the native companies like OnePlus, Oppo, these all companies are not totally moved to Flutter. So Flutter is something, yes, Flutter is cross-platform language. You can like cross-platform thing if you want to develop any application, if you want to develop Ryzen, someone has asked this question. So to that, I am just answering. Yes, you can learn Flutter as well. Knowing Flutter is very good. There is also a language as Kotlin, but we will be learning with Java today. As I'm going with basics, if I will give examples with Kotlin, Flutter, everyone may not be able to understand it. So, okay. So anything, just the concepts, conceptually, you should be able to understand properly. So now, as we have enabled USB debugging, so I will just show you. If you will be able to see here your device name in Android Studio. So once you are able to, is my screen not properly visible? अगर Yes, sir, it it is को visible. अगर किसी को हिंदी लैंग्वेज चेंज करनी होगी तो बता सकते हो. वी कैन स्पीक इन हिंदी, वी कैन गिव दिस प्रेजेंटेशन इन इंग्लिश. Minimum configuration for Android development would be you should have around 4 GB of RAM and 500 GB of hard disk. In that configuration, it will be a little bit slow, but you will be able to develop. You will be able to install it and develop it. The Android application, any Android Studio and all. Though if you have 8 GB of RAM and 500 GB of hard disk, it will be good. So that because it uses lot of process in your from your laptop. It is like huge burden on your laptop. So that's why if you have better configuration, more good. It will be like seamlessly you will be able to develop applications. Okay. Okay. I will be going with Hindi and English this thing in mix. Okay, let me increase the font size.
Okay. Okay, we are starting. So now I will be flashing the device. Let's be respectful to everyone here. I would be like, we would be having one joke session separate, but let's be respectful over here. Okay. Now I will be flashing. I have started this run command, and now you will be able to see this application launch on my device. Okay, we will. Okay, Ashu Sheikh, if you want to have some example in Kotlin, right? We will also come to that. Just first go with the basics. We'll go with basics. So why can bitmaps? This question is very good, Bob Smith. Why can bitmap cause memory issues in Android development, and how can developers optimize the usage of bitmaps to prevent these issues? So in this case, right, usually we go by using vectors and these things. So there will be a lot of memory issues if you will be using JPEG or something, right? So that will use a lot of your memory. So we go by using vectors. So in this case, we use vectors. So I hope I have like answered your question. Okay. So you are able to see this application has been launched, right? एक एप्लीकेशन लॉन्च हुई है, आपको दिख रही है आपके स्क्रीन पे? You're able to see, right? So this is nothing but hello world. Okay, this is a normal text view. Now we will be going by understanding how this hello world, how this layout, and here you are able to see this on this taskbar, right? This PHN technology sample one. So this was nothing but our application name. So now we will be going with understanding. Yes, I will be explaining the program only. So we will be just keep this picture in your mind, and then while explaining, just try to link it with it. Okay. So here, so coming to Android activity lifecycle, I will show you that, present you that Android activity lifecycle as well. So this is something, it will come while development by understanding. Okay. So I will not be explaining complete Android activity cycle right now. I will be giving you the live examples and then make you understand. Okay. So first method, whenever you load your activity, which is called is onCreate. Okay. So in onCreate, if you will be able to see, we are having the onCreate method over here. So this code, this piece of code has been given to us by basic Android framework. We haven't written that code like ourselves. We can, if you want to learn this thing, right, you can also write this code. So this is nothing, but it has been overridden from his parent activity, parent class, which is called as app compact activity. Okay. So here the I will say basics of OOPS concepts would be necessary, but even if you don't know that, it is easy to understand. So how that hello world, that layout we are able to see, that we will go in that layout. So where that layout will be is inside this activity main. So I will just show you the project structure. So in this is the project structure. What we have to do is we have to come inside app. Inside app, there will be SRC folder. In SRC folder, main, and where you will be designing your UI and all that resources that will come inside a resource folder. Okay, RES. So in RES, the main thing which has been linked here, if you will be able to see on right hand side, right side में जो देख सकते हो आप, set content view, what we are doing. This is nothing. This is the view for our layout. Okay.
Suraj and everyone, the screen who is not who are not able to see the screen properly, right? I am also streaming actually on my second laptop and I am able to see it properly. Hmm, can you just go in that settings and forcefully make that screen resolution as 480, that quality as 480? So Bob, this question is also very good. How can you optimize memory usage in Android? So for background processes, these things, right? These are little bit advanced. So everyone may not be able to understand the understanding what you are having. But yes, we can use Worker Manager. Just to answer your question, we can use Worker Manager from Jetpack library for scheduling tasks and all. So in that way, you will be able to optimize the memory usage because it will just take whichever resources is available at that time. Okay. Mm, hello. Let me unmute it. So okay. So now we are there. अभी हम यहाँ पे यहाँ पे थे Android activity main. Okay. Just comment. ठीक है. जस्ट बताइए अगर आपको स्क्रीन अभी विजिबल है या नहीं है तो. ओके. Okay, now we are in activity main. So here in activity main, if you'll be able to see, right, this is nothing. On right hand side is nothing, but you will be able to see the screen which we will show on UI, right? That screen you will be able to see. So for that, if you want to know, there will be three options. There is split option, there is code option, design option. Okay. So we will go with this code and try to understand this XML. So this Android activity example, this XML file is nothing. Uh, are you able to get me? Okay.
So here, whatever you are able to see, so this is nothing but the various components. So Android will be having various components like text view. So I will show you. So here, right, if you will see, if you will be able to see, there will be various components in this. And designing UI, Android Studio had made it very easy. Very easy. बहुत easy बना दिया है Android Studio ने कोई भी UI बनाने के लिए. So for here, if you will be able to see, there are various components. We call this as components. और हमें ये कहाँ से मिलते हैं? We get it from Android framework. Okay. So here there are common things. Most common things will be text view, button views, image views, scroll view, switch, all these things. So for now, we will just go with basic example to make you understand is text view. Okay. So this text view is suppose now here you just have to do drag and drop. Okay. Now this is drag and drop what you have done. And again, if you want to give some third text view, this is again one drag and drop. Okay. So here you just now आपने बस drag and drop कर दिया है और 3 components add कर दिए. Now let's see in code how does it look. अभी कोड में कैसे दिख रहा है ये? कोड में 3 text view आ गए हैं हमारे. We got here 3 text view what we were able to see on our screen, right? So, and also, if you want to change this device, if you want to select this devices, right, you can go and select any Pixel, Nexus, any phone. If you will go and select Nexus 9, it will give you like Nexus 9. And if you will go and select, this is Android, automatically pick the best, right? Here you can select SDKs on what Android TV, if you want to select Android TV, you can select. So whatever screen resolution you want, if you want to select, you can go and select it from here. Okay. This is nothing but Nexus 9. So this is for phone and tablets. So for now, we can go with any Pixel 5, like Pixel 4 we will go. So this is nothing but Pixel 4. So in Pixel 4, this is the resolution, and what you have to do is now currently what we are using is constraint layout. Okay, I will be just giving example you using this constraint layout. You can also use linear layouts, little layouts. We will come to that part later after this example. For now, I will tell you how you can change this colors for text view. Now, so for text 2 and example text 3. So this is nothing. And if you want to arrange this, like if you don't want this to be distorted on screen, right? What you have to do is you have to properly align this things. So how you can align is you can directly select like this and try to align. And where so see how easy it is to design an UI. So here, right now, this example 3 is there. You can bring it here. And example 2 is there. If you want to scroll down, you can scroll it down. So working with constraint layout initially would be little difficult, but uh, this is with constraint layout, right? Now, if you will be able to see moves all these 3 components, so chaining of UI will become easy. So now, if you want to show any give any color, right? So you have to just give text color for this. Okay.
Okay, now I will just be giving you now here, right? This is kind of incremental sync. So I will just to finish this textual example quickly, as we just have 3 hours and there are a lot of things to be learned. So I will just give you the example here. If you will go and just run it over here, right? Now you will be able to see. Able to see this you will be able to see in the screen that why it is disconnected. Just a minute. There is some issue. Okay, you asked me, right, how we can cast. So now you will be able to see one screen on my Firefox there. This Android cast, the link above, if you'll be able to see that link, you have to just press, and on your device, that code will be there. That QR code you have to enter into. आपको enter करना पड़ेगा इसमें आपको जो भी लिंक दिख रही है मेरी लिस्ट में दिख रही है उसमें एक कोड आएगा वो कोड आपके ड्रॉइड कास्ट करके एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो वहां पे ये कोड डाल देना and then you can be directly able to cast your device on your screen. So now after this, right, after allowing, you will be able to see one screen. Okay. So one screen you will be, but now your screen has been casted and you will be able to run your applications on that. So suppose now if I'm using, for example, okay, I'll just be going with this code. And if I'm using linear layout, so in this linear layout, all these things are not required. Okay, we'll get an example idea after this. So I will tell you the differences between layouts and what are like why relative layout we will use, where constraint layout we will use, where relative layout or linear layout we will use. So all these examples I will be giving you. So ये देते हैं. Good morning. And इसमें now here, right, this margin top and all they have given. So आपको क्या करना है इसमें? Now this is having IDs, right? Now suppose if you आप लोगों को इसको एक के नीचे एक करना है या फिर one below other if you want to do. So how you can do is just you have to type here. This will give you suggestions. Okay. And before going in that complex thing, how you can do is you can directly align like this. Align to this. So currently, right, linear layouts and all, mostly we don't use much. Okay. So if you'll see here, right, now selections. So now if you will be able to see, right, it will not, it is not proper. So orientation and all, you can just mention it over there. So how you can give orientation is something like this. I'll show you again that.
So suppose if you are giving orientation here, orientation vertical. Okay. So this orientation vertical when we have given, you will be able to see all this text have came one below other. हाँ ये दिस इज लेआउट लेआउट डिजाइनिंग में सबसे पहले बता रहा हूँ यहाँ पे, तो आपको अच्छे से समझेगा. And how can you use code in Android? This thing is you can directly, now suppose you have done this thing, right? अभी आपको ये properly align करना है. तो अभी आपको इसमें से ये करना है, राइट? या इसको ये प्रॉपरली भी हॉरिजॉन्टल अलाइन तो कर दिया है, तो इसमें अभी आपको करना है मार्जिन टॉप. तो इसमें यूजुअली राइट लिनियर लेआउट्स कंस्ट्रेंट रिलेटिव लेआउट और ये इसमें थोड़ा सा ये रहता है. लिनियर लेआउट में आपको बहुत ज्यादा कोडिंग करने की जरूरत पड़ेगी. मीन्स यू हैव टू प्रॉपरली मेजर द वेट. नाउ सपोज दिस इज देयर. Hello, are you able to understand actually? I don't know. Actually, there is मतलब उधर थोड़ा सा ये हो रहा है. Yes, Bob. We will come to this question. Whatever you are asking, to that properly. So here, right? If you will be able to see these things are there. This is example for relative layout. If you will go with now after this example, right? I will. This is example for linear layout. If after this we will go with how we can. Okay. So here, right, whenever you get this process, what you can do is terminate. You can again launch this, and you will be able to. So what the terminate app does is it will disconnect and launch here this particular application on our device. तो ये इंटरनेट डिवाइस इस पे हम देख सकते हैं. PHN टेक्नोलॉजी सैंपल 1 में 1 बिलो अदर आ चुका है ये टेक्स्ट. इसके बाद में हम आते हैं linked over here is we have done set content view. In that set content view is nothing but an this component like framework method which it has given to load our view on this on create method. So here, right, first thing which you were able to see is this from this presentation you are able to see is this on create method that we have learned. So after on create method, what happens is it calls on start and on resume. Again, you might get bored at first by just hearing this. आपको थोड़ा बोर लगेगा ये सुनने के बाद, बट ठीक है. ओके, तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आ चुके हो तो यहाँ पे आपको ये दिख गया, मतलब आपकी मेन एक्टिविटी लॉन्च हो चुकी है. तो आपको क्या इधर क्या है, दो चीजें आपको इंपॉर्टेंट थी. एक XML आपका UI डिजाइन करने के लिए, एंड दूसरा है ये मेन एक्टिविटी डॉट जावा. अगर आप कोटलिन में करते हो, इफ यू आर डूइंग कोटलिन फ्लटर, here for Kotlin you will get .kt files, and for Flutter similarly like that itself. So to optimize network usage in Android app using reducing unnecessary requests, so you have to write one network manager for it, and in that network manager
what library you are using to make network calls. Either it is Volley, either it is anything related to retrofit or something. You need to check that and then optimize it. I hope I have answered your question. Okay, Simran, I will try to make it interesting. Abhi, here, right? Now, first thing, आप इसको debug कैसे करोगे? How will you debug this? You need to know, right? एक toast message दिखता है. Toast is nothing but एक small pop-up kind of thing नीचे में. अगर कुछ issue आता है तो how do you put that? आपको toast message लिखना है, तो आप toast message कैसे लिख पाओगे? तो अभी toast message मैं explain करूंगा कि आपको अगर debug करना है, कहाँ पे कुछ issue आता है या किसी भी चीज के लिए. तो this is nothing but you have to write toast dot make text. Okay, so in this make text you have to pass this parameters. Okay, so what is this actually? So this is nothing but हमको अभी हमारे parent class को बताना है कि हमने ये function call कहाँ से किया है. हमने ये toast dot make text जो है ना, ये call कहाँ से किया है. तो इसीलिए ताकि कंपाइलर को पता चले, so that compiler will get to know from where we are asking for this. Are you getting anything what I'm like trying to make you understand? Just comment down, yes or no. Is my voice not clear now as well? Okay, so toast is, see here, now this first method what we have written is this. This is nothing but context from which class you are calling your function. Your parent class should know. What is our parent class is app compact activity. So now this you have called. After this, what is the second parameter that is required? Now suppose if you are not knowing, आपको पता नहीं है कि second parameter क्या है, आपको बस कंट्रोल स्पेस दबाना है तो बता देंगे आपको कि क्या है. तो r डॉट स्ट्रिंग है, तो अभी हमने कोई रिसोर्सेस में स्ट्रिंग ऐड नहीं की है. तो हाउ वी विल डू इज फनी लाइक फनी डेमो, दिस वी विल जस्ट कीप. अभी ये फनी डेमो है. अभी हमको इसको बताना है कि ये टोस्ट कितने समय तक रखना है हमको. आइदर यू कैन गिव कस्टम टाइम. मैं अभी सिस्टम डिफॉल्ट के लिए लेंथ लॉन्ग रखता हूँ, तो ये 1 सेकेंड के लिए आपको स्क्रीन पे दिखेगा. तो ये स्क्रीन पे दिखने के लिए आपको एक मेथड कॉल करने पड़ेंगी. एंड व्हेन यू प्रेस डॉट राइट यू विल गेट मल्टीपल सिलेक्शंस हियर इफ यू विल बी एबल टू सी. सो अभी हमको बस दिखाना है राइट, तो हम बोलेंगे शो. तो अभी as soon as I launch this application, right, you will be able to see that on my screen. हेलो, ये चीज समझिए आपको, आप सबको टोस्ट मैसेज का. समझ गया है? ठीक है. अभी टोस्ट मैसेज क्या करता है आपको दिखाता हूँ. तो यहाँ पे अगर ये एप्लीकेशन लॉन्च होती है राइट, तो यू विल बी एबल टू सी. देखो बीच नीचे फनी डेमो करके एक टोस्ट दिखा है आपको. तो फनी डेमो you will be able to see it on screen. Okay. Now toast message अपना क्लियर है. अभी आपको बताता हूँ, अगर आपको एक्टिविटी लाइफ साइकिल सीखनी है तो हाउ यू कैन लर्न इट. ओके. एक्टिविटी लाइफ साइकिल इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि व्हेन यू विल बी लॉन्चिंग फ्रॉम वन एक्टिविटी अनदर एक्टिविटी और समथिंग, दैट टाइम इट शुड बी क्लियर फॉर यू. आपको समझ में आएगा तब कि ओके ये टोस्ट मैसेज दिखा राइट आपको नीचे सबको. ओके. नाउ वी विल बी गोइंग विथ another example.
सो जिसने मिस किया है स्टार्टिंग में, हाउ टू क्रिएट दिस एंड्रॉइड एप्लीकेशन, एंड्रॉइड पूरा ये कैसे ये करते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं, मैं वो समझाऊंगा फिर से। वहां पे हम बटन्स का एग्जांपल देखेंगे। बटन्स को कॉल करने के बाद बटन्स पे हम ऑन क्लिक लिजनर कैसे को ये कर सकते हैं, वो समझाने की कोशिश करूंगा मैं आपको। प्लीज बताना तो आपको समझ रहा है नहीं समझ रहा है। ओके। एंड उसके बाद में हम एक्टिविटी लाइफ साइकिल को डीबग करेंगे, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि एक्टिविटी जब लोड होती है तो ऑन स्टार्ट, ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन डिस्ट्रॉय, ये एक्टिविटी किल कैसे होती है, ये उसका प्रोसेस अगर ये समझ जाता है, यू आर देयर, लाइक आपके लिए एंड्रॉइड डेवलपमेंट बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। एंड एंड्रॉइड डेवलपमेंट एज यू आर एबल टू सी इट इज वेरी वेरी इजी। आपको प्री रिक्वेस्टिक नॉलेज की कोई जरूरत ही नहीं है। ओके। ओके, वॉइस क्लियर है अभी? होप आई एम लाउड एंड क्लियर। Application name is nothing but this PHN technology sample. Okay. In this one example, right? So this is आपका दिमाग होता है, राइट? आपके दिमाग में आप सब स्टोर करके रखते हो। तो सिमिलरली एंड्रॉइड के पास एक दिमाग है विच इज कॉल्ड एज एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल। एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट क्या करता है, यहाँ पे सारे एक्टिविटीज जो भी हम क्रिएट करते हैं रिसाइड। So see, what we have created is main activity. Main activity is here. Okay. So here there is main activity. Here all that thing, right? Allow backup true. अगर बैकअप नहीं रखना है इसको फॉल्स कर सकते हो। तो here again, there are multiple things. These things in details I will explain sometime later, because now if I will explain you all will sleep, सो जाओगे। तो इसको बताता हूँ मैं। Sneha, just like confirm me, my voice is clear, right? For you at least. Yes, sir. And You on are YouTube clear. Live also my voice is going clearly, right? Yes, yes. Okay. तो यहाँ पे अभी आपने ये देखा है स्ट्रिंग ऐप नेम। अगर आपको ऐप का नाम चेंज करना है तो आपको कुछ नहीं, स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल में ऑटोमेटिक जब प्रोजेक्ट क्रिएट करता है तो वो प्रोजेक्ट क्रिएट करके यहाँ पे ये नेम आ जाता है, राइट? तो यहाँ पे हम जाके क्लियर कर या मतलब कोई भी एप्लीकेशन नेम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एप्लीकेशन नेम करना है लाइक टेस्ट, ऐसे आपने अगर ये कर दिया एंड इसको रन कर दिया, ओके, नाउ ऑन स्क्रीन, राइट, you will be able to see the demo test. Your application name will change. And if you want to go and search your application, but okay, you can search that with that application name on your device with whatever you are trying to create. Maybe Bob, after this session, right, we will have Q&A sessions and all your questions I will try to answer at that time. Because whatever questions you have asking here, many people might not be aware of that particular uh, concept right now, so they will get go. ओके, सो ये हो गया।
नाउ मैं आपको एक नया एग्जांपल, बटन एग्जांपल, अब ये टेक्स्ट व्यू का एग्जांपल हो गया, एंड टोस्ट बेसिकली कैसे आता है वो समझा दिया आपको। अभी कैसे कर सकते हैं हम न्यू एग्जांपल में, वो बताते हैं। ओके। हाँ, so here you are able to see new, again file. In file you will be able to see new project you have to create. Okay, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद में हियर देर विल बी दिस मिनी एक्टिविटीज अगेन। ये जिसने मिस किया था शुरुआत में उसके लिए है, तो अच्छे से समझा सुनो यहाँ पे। तो एम्प्टी एक्टिविटी हम फिर से लॉन्च करेंगे। ओके, फाइल से no, Kishore. That name won't conflict with package and class name. That is just that application name which we will be changing. So if you want to change any of your package name and all, that package name you can change. So that folder structure, right? Complete folder structure. Now we will learn as अभी आप सबको थोड़ा आइडिया मिल गया है कि एंड्रॉइड एप्लीकेशन कैसे क्रिएट करते हैं, तो अभी हम सीखेंगे वो कि हम कैसे कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल एम्प्टी एक्टिविटी ले लो, एन एम्प्टी एक्टिविटी के बाद में, एंड मैं सजेस्ट करूंगा यू ऑल टू वर्क विथ कंस्ट्रेंट लेआउट्स ओनली, because in industries nowadays everyone will be using constraint layouts. Having knowledge about relative and linear layout is good, but constraint layout in one complete layout, right? एक ही लेआउट में आपका सारा काम हो जाएगा, आपको मल्टीपल लेआउट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब यूआई के अंदर यूआई बनाते नहीं रहना पड़ेगा, आप डायरेक्टली ये कर सकते हैं। तो अभी इसमें ये क्या करना है, आपको एम्प्टी एक्टिविटी है, ठीक है। एम्प्टी एक्टिविटी में फिर से नेक्स्ट जाना है। इसमें आपका एप्लीकेशन नेम दे दो, तो मैं करूंगा PHN बटन एग्जाम्पल। ओके, तो PHN बटन एग्जाम्पल मैंने दे दिया। अभी हम थोड़ा सा बटन्स के बारे में पढ़ते हैं। ओके, बटन्स क्या है। एंड्रॉइड स्टूडियो कहाँ पे ये कर सकते हैं इंस्टॉल, दैट वन ऑल्सो आई विल टेल। सो वंस यू क्लिक ऑन फिनिश, राइट, हियर SDK आप देख सकते हो, कोई भी SDK सेलेक्ट करना है, SDK मिनिमम SDK आप सेलेक्ट कर सकते हो। वो SDK से नीचे ये काम नहीं करेगा, मोस्टली आप जो भी सिलेक्ट करोगे वो SDK से ऊपर काम करेगा। तो आपके ऊपर है आप कौन सा SDK और कौन से प्लेटफॉर्म के लिए डेवलपमेंट कर रहे हो। ओके, सो यहाँ पे जैसे ही फिनिश करते हो, as soon as you finish, your Android project will start creating. Okay, so just keep some patience. इसका स्टाइलिंग कैसे करते हैं, कस्टम लेआउट्स कैसे बनाते हैं, और लॉगिन मोस्ट नेसेसरी आप देखते हो तो लॉगिन लॉगआउट पेजेस रहते हैं जहाँ पे साइन इन करते हैं, साइन अप करते हैं, अपन आते हैं, हम वो भी कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो भी देखेंगे। प्रोग्रेस बार जो अपलोडर देखते हो सर्कल वाला जो घूमते रहता है, वो कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। जस्ट थोड़ा सा मेरे साथ रहो, आपको मतलब ये 3 hours हम विल मेक श्योर दैट वी विल मेक इट काउंट। लेट्स नॉट, अपन ये 3 hours वेस्ट नहीं होने देते। ओके, तो हम ये एग्जांपल क्लोज करते हैं। ओके, नाउ दिस इज बटन एग्जांपल। तो यहाँ पे हम बटन सीखेंगे, बटन्स पे हम कोई एक्शन कैसे लगा सकते हैं, हम वो सीखने की कोशिश करेंगे। हाउ विल वी बी एबल टू एट एनी एक्शन। सो फॉर नाउ, yes, button is UI widget, Simran. Good, good that you know that button is then widget. How we will put now for everyone, how we will put like these things, actions on buttons, that we will be learning now. So here, right, you will be able to see. So slowly we will also get to learn this Android structure, how it is there. So you, if you will be able to see, right,
here it is nothing but our complete this Android structure. If you want to see project structure, here you can select Android project packages. It will just show you the packages. But mostly, if you want short like what all files you are using, यहाँ पे आप ये कर सकते हो. ओके, यहाँ पे मेन एक्टिविटी है. मेन एक्टिविटी में RES फाइल्स में वापस से मैं समझा रहा हूँ तो अच्छे से सुनो. यहाँ पे ये एंड्रॉइड मेन एग्जांपल है. ओके, तो एंड्रॉइड मेन एग्जांपल में आप फिर से यहाँ पे जो भी ये करना है, डिजाइन बनानी है. तो अगर अभी टेक्सचर निकालना है आपको, ओके, टेक्सचर नहीं चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, कोड में जाओ, टेक्सचर को निकाल दो. टेक्सचर नहीं चाहिए हमको. अभी ये पूरा बटन का एग्जांपल है, हम बटन्स का एग्जांपल देखेंगे. तो अभी यहाँ पे ये निकाल दिया. तो ये निकालने के बाद में हमारे इसमें कोई कंपोनेंट नहीं है अभी. ओके, तो हमको ये अगर ये देखना है, तो यहाँ पे ये सॉरी, आई फॉरगॉट टू टेल यू दैट. सो डिजाइन एंड ब्लूप्रिंट इज नथिंग बट विच विल गिव यू एन आइडिया विच इज व्हाट कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे लिंक है. ओके, तो हम आते हैं डिजाइन पे. फिर से मैं आपको फॉर सिंप्लिसिटी, यहाँ पे आपको दिख रहा है राइट, व्यू एंड ऑल. तो फिर से आपको बस समझाने के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे करते हैं वो सिखाऊंगा. तो बटन, ये एक बटन आ गया है यहाँ पे. बटन 2 लाएंगे हम यहाँ पे, एंड बटन 3. ओके, तो इस पे हम अभी एक्शंस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं वो एक्शंस मैं आपको बताऊंगा. ओके, तो ध्यान से थोड़ा सा, क्योंकि ये फिर आगे वाले सेशन जो हम करने वाले हैं, कल का सेशन भी जो होगा, ये लिंक रहेगा थोड़ा उससे, आपको समझने में थोड़ी सी आसानी रहेगी. ओके, अंकित प्लीज, अंकित एंड निखिल प्लीज 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 डोंट कमेंट दिस काइंड ऑफ थिंग्स हियर. हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होंगी बट बाकी लोग जो ये चैट पढ़ रहे होंगे उन लोगों को इससे प्रॉब्लम होंगी. ओके, सो यहाँ पे हमने 3 बटन्स डाल दिए. 3 बटन्स, अभी हमको इसको प्रॉपरली ये करना है, चेंज करना है. तो हम ये कैसे कर सकते हैं, अभी आपको ब्लूप्रिंट में दिखा रहा था राइट में. तो ब्लूप्रिंट में कैसे दिखता है, Recording in progress. नाउ दिस इज द बटन. आप इसके बॉटम में इसको अलाइन कर सकते हो. तो दिस इज नथिंग बट अलाइन करना. अभी ये बटन है, इसको आप यहाँ पे अलाइन कर सकते हो. ये अलाइन कैसे कर सकते हैं बस वो बता रहा हूँ आपको. ये एक बार अलाइन हो जाता है, आप चाहते हो कि ये बटन प्रॉपरली, इसके हाइट वगैरह प्रॉपरली मैनेज हो जाए. ओके, तो आप इसकी हाइट ऐसे एडजस्ट कर सकते हो. हम्म, तो एक बार आपने हाइट एडजस्ट कर दी, तो इसमें हम बटन का टेक्स्ट करना है. अभी समझो, ये बटन 1 है, बटन 2 है, एंड बटन 3. ओके, तो 3 बटन है अपने पास. अब ये तीनों बटन पे हमको कोई ना कोई एक्शन देना है. अभी इसको अगर आपको पूरा सेंटर में अलाइन करना है तो व्हाट यू हैव टू डू इज, इसको ले ड्रैग करना है पेरेंट तक, एंड जो बॉटम वाला बटन है
उसको ड्रैग करना है आपको बॉटम तक। ये क्यों करना है? अगर आप ये मल्टीपल स्क्रीन पे, कोई स्क्रीन होगा 128 by 160, स्मॉलर स्क्रीन होगा, बिगर स्क्रीन होगा, तो अडेप्टिव लेआउट बनाने के लिए वो स्क्रीन में अपने हिसाब से ऑटोमेटिकली इट शुड एडजस्ट हाइट इन दैट लेआउट प्रॉपरली. फॉर दैट रीजन we will be able to we are doing these things. So Bob, yes, what you can do is you can note down all your questions in some notepad or something, and at the end of this session, right, we will answer all your questions. Because whatever questions you are answering here, all people may not be like, aware about these concepts. The questions what you are asking about network throttling and all these things. Okay. Okay. So now here, what you have to do is this button. First thing, what you have to do. So far, I haven't told you, right? Now, this you have to declare in your main activity as button. Now, for button, we will just take this button, button 1, button, button 3. Okay. अभी आपको क्या करना है? अभी इसके मल्टीपल तरीके हैं. इफ यू वांट टू लिसन, राइट, इसके मल्टीपल तरीके. हाउ यू विल लिसन द क्लिक लिसनर. आपको क्लिक लिसनर पे ये करना है. तो हाउ यू विल लिसन द टू द क्लिक लिसनर, ये करता है, ये समझते हैं. So Bob, for DNS related issues, whatever library for HTTP calls you will be using, right? At that time, whatever your user agent and all is there, that you need to debug what is the user agent. And after getting that user agent with server team, you need to see why those calls, whatever you are making from your end, are failing. So mostly the common cause is when we write that basic framework to make network calls and all, at that time, this HTTP related, that TCP protocol, that things mostly we need to debug. So that you can check. Okay, now these buttons are there. Now I will tell you multiple ways how you can register the click listeners for it. So how do you register click listener? पहले तो आपको अभी आपकी एक्टिविटी को बताना है कि भाई हमारा बटन है, उसको ढूंढो तुम अपने लेआउट में, क्योंकि अपने पास मल्टीपल बटन है, मल्टीपल कंपोनेंट्स है. पहले ढूंढो एंड देन अगर उस पर क्लिक करते हैं तो हमको कोई इतना कोई एक्शन परफॉर्म करना है. तो कैसे ढूंढते हैं उसको? तो बटन 1, अभी देखना इसमें टाइप कास्टिंग जावा के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं समझाऊंगा, आपको समझ जाएगा. ओके, सो बटन 1. And I will request everyone, just don't take this session as your like chat session or something. यहाँ पे कोई कुछ भी कमेंट कर रहा है, that's okay. मैं भी कमेंट पढ़ के एंजॉय करूंगा इस चीज को. आई डोंट ये, बट मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा सीख लो, उसके बाद में ये करना ही है. आपके लिए एक चैट सेशन ये रख देंगे, प्रतीक एंड whoever is commenting there. Okay. Now button, how do we find this IDs? So this is nothing, but now we are telling to, तो हम ये क्यों करते हैं? Why do we do this? So we are telling to the compiler whatever IDs we will be finding is of button type. So if you ये नहीं बताएंगे ना, ये जेनरिक टाइप होता है, कंपाइलर को पता नहीं होता है कि यार वो बटन टाइप है या फिर टेक्स्ट टाइप है या कौन से टाइप है. ओके. सो नाउ आई विल डू फाइंड व्यू बाय आईडी. ये फ्रेमवर्क का मेथड है. तो इसमें आईडी कैसे फाइंड करते हैं?
आर डॉट आई डी डॉट हमारा बटन। तो ये बटन वन का आईडी हमने फाइंड कर लिया। ओके। और इसके बाद में कहीं कहीं पे मैं जानबूझ के क्रैशेस मतलब एरर्स लाऊंगा, आप लोगों को बताना है, जस्ट टू चेक हाउ अटेंटिव यू गाइस आर। ओके। हाँ। एंड आई विल टेल यू, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ले लो दोस्तों। ये सर्टिफिकेशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट नॉलेज होता है। तो नॉलेज रखो, सर्टिफिकेशन आपको मिल जाएगा, आपके नॉलेज पे आपको जॉब मिलने वाला है। तो आई होप ये आपको, आप ये करोगे, समझने की कोशिश करोगे यहाँ पे। बटन टू, अभी बटन टू के लिए भी सेम बटन, फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आई डी डॉट बटन टू, बटन थ्री। मैंने थ्री बटन इसलिए लिए है ताकि आपको समझा पाओ अच्छे से। बटन फाइंड व्यू बाय आईडी, देख रहे हो कितना इजी है एंड्रॉइड में प्रोग्रामिंग करना, ये ऑटोमेटिक आपको सजेस्ट करता है। ओके। Yes, Kishore. R stands for that R will be one class which is auto generated. So what does R does is, in this R, this is nothing but it will this class will help you to find the resource IDs. Okay, Kishore. I hope this question was very good. So and in this session, this kind of questions are appreciated. As many questions, whatever you have. Currently what is going on that you can ask. Okay. So here r dot id dot button 3. Now how do we set the listeners? Okay. Now whatever listener I will be setting, that will not be the clean implementation, but how to do the clean implementation, that one also I will teach you. Okay. So button 1 dot set on click listener is nothing but an method exposed by our button component. Okay. So if you want to go and see the internal implementation of set on click listener, right, you just have to click on this thing, what we say, our control button, and you will be able to go and see this set on click listener method over here. So this set on click listener is nothing but view class, and all our components will be extending view class only. All our component will be extending view class only. सब क्लासेस अपने कंपोनेंट जो भी हो, बटन व्यू वगैरह, वो व्यू क्लास से ही डिराइव्ड होंगी, क्योंकि व्यू क्लास में ये सारे जो लिजनर्स रिलेटेड मेथड्स है, फाइंड व्यू बाय आईडी रिलेटेड मेथड्स है, वो सब अपने को देखने मिल जाएगा। तो ओके, अभी ये सेट ऑन क्लिक लिजनर करने के बाद में इसमें हमको बताना है कि यार जब लिजनर आता है तो हाउ वी कैन एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। So runtime object, how we create is for that view class this way. So okay. So new view dot on click listener लिख दो, ऑटोमेटिक सजेशन आएगा, उसमें एक मेथड है ऑन क्लिक। जब भी वो ऑन क्लिक आएगा, हमको क्या फंक्शन ये करना है उस पे। तो सिमिलरली set on click listener, new on click listener, button 3 dot set on click listener, सो स्टे ट्यून। इसके बाद में हम ये करेंगे, इसके बाद में हम ये सीखेंगे, मतलब ये मैं इसीलिए आपको ये बेसिक्स कवर करने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद में क्या सीखने वाले हैं मैं बताता हूँ आपको। इसके बाद में आपने अगर फोन नंबर दिया डायरेक्टली आपके एप्लीकेशन से, हम फोन कैसे कर सकते हैं, मैं वो सिखाऊंगा आपको। अगर उसके बाद में अगर हम एडिट टेक्स्ट, लॉग इन लॉग आउट पेजेस कैसे बनाते हैं, साइन अप पेजेस कैसे बनाते हैं, अगर आपको फ्रीलांसिंग करनी है किसी के लिए या कुछ भी करनी है, मतलब फ्रीलांसिंग टाइप का, जैसे साइन अप पेजेस बनाना है किसी के लिए, लॉग इन लॉग आउट पेजेस बना के देना है,
आप कैसे शुरू कर सकते हो वो बताने की कोशिश करूंगा मैं, तो इसीलिए बेसिक्स ध्यान रखने की कोशिश करो। ओके। हाँ। सो नाउ हम इसमें अलग अलग टोस्ट मैसेज डालेंगे अभी के लिए। इसके बाद में हम बैकग्राउंड कलर भी चेंज करेंगे। अभी के लिए तो अलग अलग ये डालते हैं। ओके। टोस्ट मैसेज डालते हैं। तो टोस्ट मैसेज मैंने इससे पहले ही बताया था। तो टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट। सो टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट में 3 पैरामीटर्स होते हैं। हम कहाँ से कॉल कर रहे हैं? दिस। अभी आपको बताना है मैं जो भी सिंटैक्स लिखूंगा वो काम करेगा या नहीं करेगा। ओके। दिस। फिर सेकंड पैरामीटर क्या है? स्ट्रिंग बटन 1 क्लिक। एंड थर्ड पैरामीटर क्या है? कोई कमेंट कमेंट पे बता सकते हो आप? टाइम लेंथ लॉन्ग। तो हमको अभी यूआई पे दिखाना है इसको। शो। सो आई विल वेट फॉर लाइक नेक्स्ट 5 to 10 seconds. And why this is giving error? Can someone comment here? कोई भी मतलब इसका आंसर बस कमेंट कर दो कि इधर एरर क्यों आ रहा है, व्हाई इट इज हाईलाइटेड विद दिस पर्टिकुलर रेड स्क्रीन। Bob, can you please stop posting these questions? Actually, everyone, right? They will get disturbed. And your questions, right? One on one, we can discuss. Okay. Yes, Manu, you will be getting the recorded session. No, no worries about that. आईडी बटन ही लिया है। यस। हिमन। हिमन इधर अपने साथ है। आई डोंट नो रेस्ट वर्ल्ड व्हाट ऑल इज डूइंग। इफ यू गाइस विल like concentrate properly in this session, you might get certification also. So please try to concentrate. ओके। तो आईडी बटन 1 जो है ह्यूमन। ओके। इसमें राइट बटन 1 में कुछ और इशू है, ये इशू नहीं है। ओके बट गुड दैट यू ट्राइड। सो एनी मोर पीपल दैट वुड वांट टू आंसर this thing? So Mansi, in that thing, right? If I will do get application context, that thing will be there for whole application can be accessed, and there we can get memory leaks. Why we can get memory leaks is that I will come to that part maybe in tomorrow's session, because today all will not be able to understand this get application context where we need to use. This is very important, where we will be using get application context and only this. This is a very important thing because to avoid no bracket here, right? I will only answer now. Here, this thing, like now, as this we are calling from this interface, right? This doesn't know. So what we have to do is main activity dot this. So when you do this, your compiler, this thing, bracket is not missing. Sorry, sorry to tell you this thing. Okay, thank you that you guessed it, but bracket was not missing. Here, right? This main activity dot this as you are calling. So where this on click is there, okay? It has been derived from this particularly this classes. So inside this, right? इसमें इसको पता नहीं रहेगा कि यार कहाँ से कौन सा दिस है, कौन सा क्लास ये कॉल करने की कोशिश कर रहा है, पेरेंट क्लास है, चाइल्ड क्लास है। तो इसीलिए हमको एक्सटेंसिवली क्लास पेरेंट क्लास के नेम के साथ दिस जोड़ना पड़ेगा। ओके। Bracket closure is not remaining. Okay. So now we'll be doing same thing for 2 and 3. So button 2 clicked, button 3 clicked. Okay.
अभी हम इस प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करते हैं। ओके, इतना समझा आप लोगों को? ये देखो, फर्स्ट आता है, बाद में आता है Apurva Chaudhary. I didn't understood your question, but maybe you can reframe your question and ask again. Uh, okay, so this toast you are able to see, right? Now this toast will run in our device. How it will run in our device, we'll check that. Okay, so this is my device. Now how it will look in my device, we'll just check that. Now this is getting loaded. ओके किशोर, सो मेन एक्टिविटी डॉट दिस हमने इसलिए लिखा है ना, क्योंकि हम अभी ऑन क्लिक मेथड के अंदर है। तो जब ऑन क्लिक मेथड के अंदर रहता है तो कंपाइलर को पता नहीं रहता है कि अभी ये कौन कॉल करने की कोशिश कर रहा है, ये टोस्ट कौन कॉल करने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए कंपाइलर को बताने के लिए कि यार ये मेन एक्टिविटी से कॉल कर रहे हैं, इसीलिए मेन एक्टिविटी डॉट दिस लिखा है। दिस से काम नहीं हो रहा था। दिस मतलब वो समझ रहा था व्यू क्लास करने की कोशिश कर रहा है, एम्बिग्यूटी एरर आ रही थी वहां पर, तो इसीलिए। आई होप आई मेड दैट अंडरस्टूड। अभी यहाँ पे स्क्रीन पे हमने लेफ्ट एंड राइट अलाइन नहीं किया था, राइट? तो देखो बटन्स का अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है, बटन्स का अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है, राइट? यू आर एबल टू सी हियर ऑन माय स्क्रीन? तो बटन वन पे अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ। बटन वन पे आपको दिखेगा बटन वन क्लिक। बटन टू पे क्लिक कर रहा हूँ, आपको दिखेगा बटन टू इज क्लिक। बटन थ्री पे क्लिक करेगा, बटन थ्री इज क्लिक। यू विल बी एबल टू सी। And which your energy engineering background you are from, this Android development is very easy. Anyone can do it, either you are from Android background or any background. uh, so for that, right, Android dot button one इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि हमने यहाँ पे जो आईडी दी है वो आईडी बटन वन नहीं है, वो आईडी बटन ही है। अगर इसको बटन वन करना है तो हम इसको इधर जो भी आईडीज हम लिखेंगे, राइट, इसको हमको मैप करना है यूआई के साथ। ओके, तो yes, each buttons are left. Why those are left? That I will tell you. Because we haven't aligned it from left or right hand side. We need to align those buttons from left and right hand side also. Okay. Yes, because now you will be able to see my screen where button, because IDs we will assign, where we will be assigning IDs for buttons and all those things. We will be assigning those things in our XML file. So in XML file, that ID name was button. So if you will make it as button one, then you have to XML, right? We have multiple IDs, right? Uh, so here, so we have multiple IDs for button one. We are having button two. We are having button two, and button three. Now these three IDs we have to tell in UI that on activity screen that we are trying to find these activities and put this thing, click listener on it. Okay, so after doing that, you have already seen. Now how to align it to center. Okay,
that I will tell you. So just scroll it till. ओके, ये यहाँ पे अलाइन हो गया है। नाउ ये पेरेंट, ये जो है ना राइट एंड लेफ्ट में, ये पेरेंट है। पेरेंट और चाइल्ड से कहाँ पे ये होना चाहिए, वो मैं ये करने की ये कोशिश, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसके बाद में आप इसको, ये बटन को भी राइट अलाइन कर दो, लेफ्ट अलाइन कर दो। दिस इज ऑलरेडी अलाइन टू बॉटम ऑफ इट। एंड बटन 3 को भी सेम। ओके, अभी आपको दिख रहा होगा ये एक्सएमएल फाइल में भी ये बटन्स में एरर आ रहा था, वो एरर नहीं आ रहा है अभी, राइट। एंड व्हाई दिस यूआई इज कमिंग लाइक दिस इज, हम इसको ये करने की कोशिश कर रहे हैं। ये यूआई इसलिए ऐसे दिख रहा है क्योंकि हम इस रेजोल्यूशन से एक बड़े स्क्रीन पे डिजाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बस ये एग्जांपल देना चाहता हूँ, आप कोई भी स्क्रीन में डिजाइन करो, अगर आप कंस्ट्रेंट लेआउट में काम करते हो तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है आपके यूआई में। तो ये कोई भी लैंग्वेज आप, मतलब जावा, कोटलिन, फ्लटर, कोई भी लैंग्वेज आप ये कर सकते हो। तो लैंग्वेज आना जरूरी नहीं है इसके लिए, अगर आपको जावा के इन डेप्थ सब नॉलेज नहीं है, कोई जरूरत नहीं है धार्मिक। बटन इज नथिंग बट a UI component, Vani. That UI component we are using to give our actions and all. So now, if you will see, I will just rerun this program on my UI. So see, you will be able to see here now. It is loading. So now it has been loaded. Now are you able to see? Now are you everyone able to see it is there in this thing? Hello? Yes, Ashpreet, we will be sharing this learning content. How to, I will even make one document where how you can load this existing projects in your Android Studio, that you will get to know, or reference link I will be sending. So these buttons are nothing. Now, if you are able to see it in center, you will be able to see if I click it, button one click, still the click listeners are as it is. Okay. हेलो, आर यू एबल टू, आपको समझ रहा है आप लोगों को अभी जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था? ओके, अभी इसके बाद में हम देखते हैं कि अगर इसमें बैकग्राउंड कलर देना है तो बैकग्राउंड कलर कैसे दे सकते हो आप। ओके, तो यहाँ पे राइट, पूरे बैकग्राउंड का अगर एक कलर देना है, अभी बटन ब्लू है, तो अगर आपको
तो अभी इसमें कोई भी कलर अगर आपको देना है तो इसमें आप कलर दे सकते हो, कोई कलर कोड। अभी जैसे मुझे कुछ कलर कोड पता है तो मैं वो यूज कर रहा हूँ, बट आप कलर पैलेट्स यूज कर सकते हो। तो उसके लिए जैसे अभी मैंने ये दे दिया FBB, एक ऑरेंज कलर है फॉर एग्जाम्पल, ये नहीं मैं बस कलर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो इफ आई विल बी रनिंग दिस, ओके, अगर ये रन करता हो तो अगर आप UI पे देखोगे तो अभी अपने एप्लीकेशन का बैकग्राउंड जो है वो ऑरेंज कलर में आ गया, राइट? यू आर एबल टू सी इट। Yes, Aditya, that static or dynamic also, while runtime also, we can change the color. So if you want to change the button colors, suppose when button 2 is there, so button 2 dot set. Okay, so I will be just giving you the example how runtime you can change the colors of buttons and बैकग्राउंड एज वेल। नाउ सपोज आपको बताना है अगर बटन 1 प्रेस हो गया तो बटन 2 और बटन 3 का कलर रेड हो जाना चाहिए। एंड इफ बटन सेम थिंग, इफ अगर ये प्रेस होता है, बटन 2 प्रेस होता है तो बटन 1 और बटन 3 का कलर रेड हो जाना चाहिए। अगर बटन 3 प्रेस होता है तो बटन 2 एंड बटन 1 का कलर रेड हो जाना चाहिए। ओके, so this is how runtime you can change this thing, change the colors. Okay, so अभी क्या होगा, अगर आप UI पे देखोगे तो अभी सबका कलर क्या है, ब्लू है, राइट? अभी ब्लू है, राइट कलर। तो अभी मैं चेंज करता हूँ तो अभी बटन कलर रेड हो गया। अभी मैं बटन 2 पे क्लिक करता हूँ तो हमको रीसेट करना पड़ता है इसका कलर, जो हमने रिसेट नहीं किया। अभी इसको रिसेट कैसे कर सकते हैं? तो अभी इसको रिसेट अगर करना है तो हम जाएंगे वापस से यहाँ पे, बटन 2 ब्लू, सो ब्लू। ओके, ये बेसिक एग्जांपल है यहाँ से। सो धार्मिक, इट जस्ट टेक 10 to 15 seconds to build one app. So if you will see here, I clicked it, it is launched also on my device. So it is that simple. Okay, so if your device configuration is low, it will take more time. Now suppose here there are 3 buttons. Now these 3 buttons I will click. Okay, so this has changed the color. Now if I am clicking on button 2, other 2 are red. If I am clicking on button 3, so button 3 logic, maybe I have written wrong. Okay, here button 3. So this way you can debug it from your UI and you will be able to see now that button 3 issue is also solved. So other 2 are red, other 2 are red, other 2 are red. Able to understand this, right? So Vani, even if you are, see, in Android, right, currently we are studying application development. So C++ will come into picture when
There is C++ coding is also there, but if you want to make career in Android in C++, there are frameworks that you might in Android frameworks you might be able to pursue. So currently we are not going with Android frameworks or Android HL layers or something. We are just trying to understand how basically with this thing we can do like application we can make and start doing their own freelancing. They can start their software development कोर्स कैसे शुरू कर सकते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अपना करियर वगैरह कैसे शुरू कर सकते हैं, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. इट इज इजी विथ एंड्रॉइड application development I'm saying, and then you can okay, so this is done. और आप लोगों को ये समझ गया राइट सबको, बटन क्लिक लिजनर्स कैसे काम करते हैं. अभी मैं यही एग्जांपल आपको रन टाइम में ये बटन्स कैसे ये कर सकते हैं वो बताता हूँ. ओके, अभी इसमें अगर आपको नई एक्टिविटी करनी है, ओके, अभी ये एक ही स्क्रीन का एप्लीकेशन हमने देखा है राइट. अभी इसमें नया एप्लीकेशन आपको देखना है. ओके अभिराज, आप फॉर दिस क्वेश्चन विल बी फॉर yes, Pankaj, we can set some waiting time also, that sleep threads and all that we can cover in like second half or something, second half session. And Abhiraj, about this Android explain Android developing. Can you please elaborate Android developing means what you want? म्हणजे आपको क्या चाहिए वो बता सकते हो, आप हिंदी में भी कमेंट कर सकते हो, अपन हिंदी में देखेंगे. So Sunny, mostly in companies, right? Those people are adapting Java, Android, and Flutter. Java, Flutter, and Kotlin. So if you know Java, right, other languages to learn it will become very easy. So Java, when you will be doing like coming into Android, most of the Android framework only will create a code and give it to you. You don't have to rewrite whole code. You just need to arrange it properly, make it presentable. Now, whatever UI we are making, it is not at all presentable. We will also come to that thing where we can make this presentable, how we can load images and all those things. That is something complex which everyone might at this time might not be able to understand. हाँ 2 बजे तक है तो okay, Samruddhi. So XML file is nothing but where we design our UI, where whole UI related components we design and make it visible to user. So XML is that. Means again, Pradeep, language preferences for everyone. I'm saying language preference depends on individual. You can use Kotlin, you can use Java, you can use Flutter. So it doesn't matter. Every language can communicate with each other. No issue with it. Okay, so this is the now I will tell you the same example. If you are going with the concept of interface, so interface is nothing. I hope everyone might not be aware for this interface, so I will be explaining. मैं इंटरफेस क्या है वो बता रहा था. तो इंटरफेस कुछ नहीं है, एक एम्प्टी इम्प्लीमेंटेशन होता है जिसमें हम उसके मेथड्स ओवरराइड करके उसको एक बिहेवियर देते हैं. तो मतलब समझ लो कि जैसे क्लास है, क्लास को हम एक एक्सटेंड कर सकते हैं, बट इंटरफेस मल्टीपल इंटरफेसेस हम एक साथ इंप्लीमेंट कर सकते हैं. तो अभी अगर मैंने इंप्लीमेंट ऑन क्लिक लिजनर कर दिया, ओके, व्यू डॉट ऑन क्लिक लिजनर कर दिया, तो अभी इसमें क्या आएगा, तो ये बोलेगा मेरे को कि यार मेरे मेथड्स भी ओवरराइड कर. अगर मेरे मेथड्स ओवरराइड नहीं करेगा तो मैं तेरे को यूज नहीं करने दूंगा. तो ये यही बोलता है. तो इसमें कौन कौन से मेथड है, तो इसमें क्या करना है, मेथड ओवरराइड करने के लिए आपको कंट्रोल स्पेस क्लिक करना है
कंट्रोल स्पेस में आपको दिखेगा ऑन क्लिक लिजनर, कंट्रोल स्पेस। ओके, अभी आप देखोगे कि एक बार वो ऑन क्लिक होने के बाद में हमारा ये एरर, yes Zavaria, this workshop, after this workshop you will be able to develop your own applications. You will be able to at least start with your own applications. Just you need to be consistent while developing. आपको दिन में एटलीस्ट 1 घंटा ही, मैं बोलूंगा हाफ एन आवर या 1 घंटा देना है। आपको थोड़ी सी चीजें समझनी है कि ये यूआई कैसे बनाते हैं, मोबाइल में कैसे फ्लैश करते हैं, तो ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेंगी। ओके, सो ऑन क्लिक ये हो गया। अभी इसमें मैं ये बताता हूँ, हमने इतना बड़ा बड़ा कोड लिखा है, राइट? ये कोड लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो अभी इसमें क्या होगा, इसमें हमने आईडीज ऑलरेडी फाइंड कर रखी है। तो अभी इसमें हमको ये करना है, स्विच व्यू डॉट गेट आईडी केस बटन 1 केस ओके। तो हमने ये जो यहाँ पे लिखा है, ओके, ओवरराइट क्यों करते हैं, मैंने वही समझा था ना आपको। हम ओवरराइड इसलिए करते हैं क्योंकि इंटरफेस में अगर कुछ मेथड्स डिफाइंड है, अगर मैं कोई इंटरफेस में आपने मेथड लिखी है तो उसको ओवरराइड करना पड़ेगा। वो ओवरराइड करने के बाद अब उसको इम्प्लीमेंटेशन मत दो, उसको कुछ उसमें कुछ मत रखो। अगर मैंने इसमें कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिया तो ये कैसे हो जाएगा, ये एम्प्टी ही हो जाएगा। अभी इसको विद एग्जांपल अगर मुझे आपको समझाना होगा, साहू जी, अगर मुझे आपको समझाना होगा तो इसमें कैसे होता है कि जैसे समझ लो, अगर आप आपके पेरेंट्स से आपने कुछ इनहेरिट किया है, तो सिमिलरली वो क्लास का एग्जांपल हो गया। बट आप बाहर से एक इंटरफेस से और चीजें इनहेरिट करते हो, वो उसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन देना नहीं देना वो आप पे। ओके, तो मैं वही इम्प्लीमेंटेशन जो इसमें हमने मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड में लिखने की कोशिश की है, तो मैं वो अ, इधर शॉर्ट में करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इससे क्या होता है, अभी समझो मैंने ये कर दिया। ओके, तो मैंने ये कर दिया। और अगर ये कोड मेरे को कमेंट करना है, तो हाउ आई कैन कमेंट इज, दिस इज हाउ आई कैन कमेंट द कोड। तो ये मल्टीपल लाइंस का कमेंट हो गया मेरा, तो मैंने कमेंट कर दिया। Hmm, Raza, this Android means Android Studio is used to develop Android applications only.
Yes. I'm using Android Studio only. And now, tell me, you guys tell me, will this give any issue or not? Why this is in yellow color? Okay. So that's okay. We'll come to that part. Now, if you will see, right, still we are able to launch that UI. But now, if you will see how much less code we need to write, we didn't need to write, and this is like kind of clean implementation. So this is how in industries when you will go, you need to make it clear. Like the code, you should write it clear, not anywhere you should write anything. So for practice purpose, you can do that. Yes, switch statement also used in C language. So this is switch case. We have checked this thing, and if you will see the implementation here on UI, it will be same. Okay. So guys, this thing is important that we need to do to give a call on this thing to our on click. So what does this do is this will tell to our view class. Now if you will see, we will not be able to show any pop-up message or anything. Okay. So now if I will run it again, you will be able to see. Now we should be able to click it and change the colors. See. Okay. अभी हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी में जाते हैं. ओके. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लॉजिक पढ़ने की कोशिश करते हैं. एंड दैट इज नथिंग बट ये एडिट एडिट टेक्स्ट वगैरह जहाँ पे आप टाइप कर सकते हो कुछ भी, कैसे कर सकते हो, तो वो बताने की कोशिश करूंगा मैं. ओके. हेलो. हेलो. Hello. यस यस. जस्ट अ मिनट. यस आई. हेलो. यहाँ पे मेन एक्टिविटी साहू साहू जी, यहाँ पे मेन एक्टिविटी हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये कोई
मेथड के अंदर से हम कॉल नहीं कर रहे थे, राइट? ये डायरेक्टली क्लास के अंदर से कॉल कर रहे थे, तो यहाँ पे पता चल जाता है कंपाइलर को कि दिस इज कॉल्ड फ्रॉम this class. That's why. And also this thing here, right? No one have asked this question. I don't know why no one have asked this question. That super dot on create. Why it is there on super dot on create when we have this on create method. So ये super dot on create method इसलिए है क्योंकि हम अभी हमारे एक्टिविटी को बोल रहे हैं कि तुम जो भी इनहेरिट करोगे ना, तो सुपर डॉट ऑन क्रिएट मेथड से ये करो, मतलब इसके पेरेंट क्लास से। सो ये ऑन क्रिएट कौन से क्लास में जाएगा? फ्यूल सी फ्रैगमेंट एक्टिविटी, ये इसका पेरेंट क्लास है। सॉरी, ओके ओके। तो इसके बाद में हम वेरियस कंपोनेंट्स, अभी जैसे एडिट टेक्स्ट है वो करते हैं। तो स्नेहा, मे बी इफ एवरीवन वांट्स सम टाइम ऑफ ब्रेक, राइट, 10-20 minutes, we can Yes, sir. arrange that. You can Yes, announce that. yes, it's no problem. Guys, now we'll be having a break of 20 minutes. Please join again at 1:30 p.m. You can join it. And one more thing I wanted to tell you that please check the video description. In that you will get the links of attendance form. So whoever is asking for certificate, please fill that form. It is compulsory to fill the attendance form in order to get the certificate of this workshop. And also, registration form is there. If your friend want to register for the workshop other than Android development, you can share the registration link to them. Okay. Now we'll be having a break of 20 minutes.
Sumit sir, shall we start? Hello. Hi again. So everyone done with their lunch? Hello. Good Hello. afternoon, everyone. I welcome all the students again after break. Sumit sir, I request you to please proceed with the session. Sure. Hello. Everyone awake? Hello.